Okay. So what is multivibrator? Multivibrator is a two-state circuit that has 0 and 1. So it has two-state output. Either it is output is 0 or the output is 1. Okay. Clear it is? Achha. Now, for designing the multivibrator, this 555 timer, this is a IC. 555 timer IC is used for designing a multivibrator. So you can see in the, this is a pin diagram of 555 IC. First pin is ground, second is the trigger, third is the output, four is the reset, fifth one is the control voltage, sixth one is the threshold voltage, next is the discharge, and next then there is a supply voltage. So these are the 8 pin in the timer IC. Okay. Now what is the function of this IC? You can see this diagram is the internal circuit of this IC. Okay, this is the internal block diagram of 555 timer. So this is the internal diagram of this IC. So you can see in the internal of this IC, there are two comparators. Two comparators is there. One flip flop is there. This is the SR flip flop, and there is a circuit whose voltage divided circuit is. Here, whatever the VCC voltage, this VCC is internally divided at this point, at this point. Okay. So we already discussed what is the comparator. So anyone, what is comparator? Which compares binary inputs. Comparator compares the binary input, it is okay. But in case of analog circuit, comparator is the such type of device who compares two voltage. Okay. So suppose one voltage is V1 and other voltage is V2. So comparator compares these two voltages, that which voltage is large and which voltage is small. Here, this comparator compares two voltages, this pin number 6 voltage and this voltage 2 by 3 VCC. This point voltage is compared by the comparator, and according to this comparison of the two voltages, here output is generated. Same for the comparator 2. This is one input and this is the other input. So your trigger voltage and this voltage is compared, and according to the comparison, your output is generated. So whatever the comparison of this voltage V1 and V2, according to the comparison, your output will be generated. Basically, we discussed this comparator circuit also in the theory classes, that in case of op-amp, comparator is also designed by the help of op-amp. So in case of op-amp, there are two input pins. One is the inverting terminal, other is the non-inverting terminal. So suppose V1 is applied in the negative terminal and V2 is applied in the positive terminal. And this is the output terminal V0. So if the negative terminal voltage is high, then your output is 0 or minus saturation voltage. And if the positive terminal voltage is high, then your output is logical high voltage or 1 or plus V saturation. If the negative voltage is high, then your output is 0. And if the positive voltage is high, your output is 1. So what voltage you are getting across the output side, depend on that, you can know which voltage is high. If you are getting here the 0, then negative voltage is high. If you are getting the 1, that means your positive voltage is high. Positive terminal voltage is high. So you can recognize which voltage V1 and V2 is high and which one is low. Clear it is? इस दोनों में बड़ा कौन है, छोटा कौन है? अगर V1 बड़ा होगा तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल में दिया हुआ है V1, यहाँ पे आउटपुट 0 आ जाएगा. इसका मतलब हुआ कि नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज क्या है, वो पॉजिटिव से अगर नेगेटिव का टर्मिनल का वोल्टेज हाई होगा तो आउटपुट में 0 आ जाएगा. अगर 0 आएगा माने नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज हाई है. अगर यहाँ आउटपुट में 1 आ रहा है, दैट मीन्स हमारा पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज हाई.
क्लियर इट इज। और इस तरह से दिया सकता, इफ द नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज इज हाई, दैट मीन्स यू आर गेटिंग द माइनस वी सैचुरेशन अक्रॉस द आउटपुट, माने माइनस में मैक्सिमम वोल्टेज, और इफ द पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज इज हाई, देन यू आर गेटिंग प्लस वी सैचुरेशन। Okay, plus 15, minus 15, like this. Clear? Yes, no? Okay. Yes, sir. So, today we just discussed the what are the pin configuration and what is the function of these all pins. So next is, you can see, wait a second. This pin number 1, so pin number 1 is ground. Pin number 1 is ground. Where is the pin number 1? This is the pin number 1. It is the ground pin. So what is the function of ground pin? All voltages are measured with respect to this terminal voltage. So you know, any voltage is measured with respect to terminal voltage, means ground voltage. Okay, suppose your any voltage, suppose output voltage is 5 volts. So it is 5 with respect to ground, means with respect to 0 volt. Yes. So any voltage is measured with respect to ground voltage. So pin number 1 is the ground voltage. Pin number 2 is the trigger voltage. This pin number 2 is trigger. Trigger, here you can see this trigger terminal is connected to comparator 2. So here trigger is basically, by using the trigger, this terminal, you supply input. This type of input you are supplying. Okay. Either maybe positive trigger voltage or negative trigger voltage. Positive, this is the example of positive trigger voltage. Negative trigger voltage is like this. Suppose this is a zero line, then this is a minus. So this is negative trigger. Okay, this is the 0 line. And here it is, this is a 0 line and the variation is in positive. So this is a positive trigger. Okay, this is a negative trigger. So from the trigger voltage, you apply the, from the trigger terminal, you apply the trigger voltage. So whatever the voltage, trigger voltage is applied, this trigger voltage is compared with this terminal voltage, and according to that, your output is changed or generated. Okay. So this trigger is one of the input terminal of comparator 2. So you can see the output of the 555 timer depends on the amplitude of the external trigger. So the output of the second comparator is depends on the trigger voltage, external trigger pulse applied to this pin when a negative pulse of amplitude larger than 1/3 VCC is applied. You can see this VCC is the supply voltage. By using the voltage divider circuit, this is a voltage divider circuit. Voltage divider circuit means here if you supply the voltage VCC at this point, here the voltage is 2/3 VCC and here the voltage is 1/3 VCC. Due to this resistance, whatever is connected in the series, this VCC is divided and you are getting 2/3 at this point and 1/3 is this point by using the voltage divider. Okay. So by using with the help of voltage divider, you are getting this voltage. Clear it is? Okay. So you can see here 1/3 VCC is at this point. So suppose if the voltage at trigger point is 0, then this 1/3 VCC is large. But if the voltage at trigger voltage is greater than 1/3 VCC, that means here the output will be changed. Clear it is? Initially trigger voltage is 0. Initial trigger voltage is 0. Suppose you are not providing the voltage, trigger voltage. Then this is 0. This is 1/3 VCC at this terminal. So your output is depend on this 1/3 VCC. Okay. But when you supply the trigger voltage, then when this trigger voltage is greater than 1/3 VCC, then there is a change across the output. समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो बोलो, मैं एग्जांपल दे देता हूँ. अच्छा ठीक है, नहीं आया तो देखो.
सपोज ये 1/3 VCC इस टर्मिनल में निगेटिव में सपोज कनेक्ट किया 1/3 VCC। आज मैं माउस यूज कर रहा हूँ, पेन नहीं है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में। सपोज एट दिस टर्मिनल सपोज V1 इज 1/3 VCC। अब VCC कुछ भी हो सकता है, सपोज VCC इज 15 वोल्ट, तो 15 वोल्ट है सपोज VCC, तो 3 से कट गया, कितना आया 5। तो 1/3 VCC मैंने सपोज दिया 5 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। नाउ इफ यू सप्लाई द ट्रिगर वोल्टेज एंड योर ट्रिगर वोल्टेज इज, अब इनिशियली क्या है, ट्रिगर वोल्टेज 0 है, तुमने कोई वोल्टेज दिया ही नहीं ट्रिगर में, ट्रिगर इज गिवन बाय द यूजर, by you, so if you not supply any trigger voltage man this is 0, okay। अब यहाँ पे 5 है, सपोज नेगेटिव टर्मिनल में 5 है, तो जो आउटपुट क्या आएगा तुम्हारा, नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज हाई है, पॉजिटिव में 0 है, तो आउटपुट तुम्हारा 0 आएगा, 0, क्लियर। 0 और माइनस V सैचुरेशन माने माइनस टर्मिनल का वोल्टेज ज्यादा है, क्लियर, ठीक है। अब देखो ट्रिगर वोल्टेज हम लोगों ने दिया, अगर ट्रिगर वोल्टेज इस 5 वोल्टेज से कम रहेगा तब तो जो पहले 0 था तो 0 ही रह जाएगा। लेकिन अगर ट्रिगर वोल्टेज अगर ये सपोज 6 वोल्टेज हो या 5.5 से थोड़ा सा भी ज्यादा हो, 5.001, 5 वोल्टेज से जैसे ही थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया 5 पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज, तब क्या होगा, ये तो कॉम्परेटिंग सर्किट है, तुम्हारा आउटपुट जो है इसको कंपेयर करके चेंज हो जाएगा, पहले 0 था अब 1 हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज ज्यादा हो गया, क्लियर। So when the trigger voltage is applied and this trigger voltage is greater than this 1/3 VCC, your comparator output, comparator 2 output will be changed। बस यही छोटा सा बात मैं बोल रहा था, क्लियर इट इज, ठीक है, यस नो, Yes, sir. ट्रिगर गया, नेक्स्ट आउटपुट वोल्टेज, तो कोई भी आउटपुट ऑफ द सर्किट इज जनरेटेड अक्रॉस द पिन नंबर 3, योर आउटपुट टर्मिनल इज पिन नंबर 3। So you can see here what is written here. There are 2 ways of load। अच्छा, लोड जो है वो सपोज एलईडी, देखो आज के डेट में तुम लोग आर्डिनो से डिफरेंट छोटा छोटा प्रोग्रामिंग लग करके ब्लिंकिंग एलईडी, ग्लोइंग एलईडी ये सब जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जब आर्डिनो नहीं आया था उस समय आर्डिनो डायरेक्ट माइक्रो कंट्रोल यूज होता था, और माइक्रो कंट्रोल में प्रोग्रामिंग करके उसको यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट था। तो पहले बहुत ज्यादा ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में नहीं यूज होता था, बड़ा प्रोजेक्ट में यूज होता था, लेकिन इतना जस्ट ग्लोइंग एलईडी और ब्लिंकिंग एलईडी में माइक्रो कंट्रोल को नहीं यूज किया है, ठीक है। तो अब यूज हो रहा है। तो पहले ये सब छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में क्या होता था, 555 टाइमर जो आईसी है ये यूज होता था, ठीक है। ये जैसे जो वेव फॉर्म जनरेट करता है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो बाय यूजिंग दिस पॉजिटिव नेगेटिव वेव फॉर्म योर एलईडी विल बी ऑन एंड ऑन, जब हाई वोल्टेज होगा इट विल बी ग्लो एंड जब जो लो होगा तो इट विल बी ऑफ। तो डिपेंडिंग ऑन तो स्मॉल प्रोजेक्ट्स में एलईडी को ब्लिंक कराने के लिए, ग्लो कराने के लिए ये 555 टाइमर आईसी पहले बहुत यूज होता है। अच्छा, अब ये जो लोड है, तो सपोज ये एलईडी जो यूज कर रहे हो, दिस इज द लोड फॉर द सर्किट। अब तो ये लोड को कनेक्ट करने का तरीका क्या है, तो देयर आर 2 वेज ए लोड कैन बी कनेक्टेड टू द आउटपुट टर्मिनल, वट एवर द टर्मिनल, पिन नंबर कितना 3। So how the load is connected, 2 ways, either your load is connected between the VCC and pin number 3, VCC and pin number 3, or or output pin and ground, इसके बीच में कनेक्ट हो सकता है। So your load is connected either between the ground and 3 or between the VCC and 3। So this is the 2 way of connecting the load। भाई लिखा हुआ, there are 2 ways a load can be connected to the output terminal, either pin 3 and ground, माने पिन 3 और पिन 1 के बीच में लोड को कनेक्ट कर सकते हो, और बिटवीन पिन 3 एंड द सप्लाई वोल्टेज, पिन 3 और सप्लाई वोल्टेज के बीच में भी कनेक्ट कर सकते हो। इट इज ओके हाउ द लोड इज कनेक्टेड इन द विद द आईसी, क्लियर, ठीक है ना। यस सर। नेक्स्ट पिन क्या है, रीसेट पिन।
You know the term reset? Platform में reset हाँ ठीक ही बोल रहे. Reset is basically what? There is a reset pin. If you provide the voltage to the reset pin, then your circuit will be reset. Reset means its output and all the values of different pins. It is set to the initial value. So basically the initial value is 0. So your output is set to 0. So if your reset pin is enabled, that means your program or whatever the system it is run from the starting. तो फिर से स्टार्ट होकर रन होगा. क्लियर इट इज. तो अगर प्रोग्रामिंग के केस में क्या होता है, अगर रिसेट करोगे तो फिर से स्टार्टिंग से रन करेगा, फिर से आउटपुट देगा. तो योर इट इज basically set to the initial value. And if you provide the reset, then your output is 0 here. In this case, output is going to the initial value, and mainly, in most of cases, initial value is set to 0. Next is the control voltage. देखो यहाँ पे control pin है. Where is the control? This is a control voltage, pin number 5. So at this, you can see in the circuit, at this terminal, the voltage is 2 by 3 VCC. Comparator one input is 2 by 3 VCC. So this 2 by 3 VCC is fixed. Whatever the supply voltage, so depend on that. This 2 by 3 VCC is fixed. If you want to change this voltage, this terminal voltage, you can supply the voltage at controlled voltage terminal. ओके, अगर यहाँ से कुछ दूसरा वोल्टेज दे दोगे 5 टर्मिनल से, तो क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज चेंज होगा. तो दिस कंट्रोल वोल्टेज कैन कंट्रोल द इनपुट ऑफ दिस कंपैरेटर 1. तो दिस इज द कंट्रोल वोल्टेज. तो उसमें भी दो तरीका है उसको कंट्रोल करने का. आइदर यू कैन डायरेक्टली प्रोवाइड सम वोल्टेज एट दिस पॉइंट, वहां पे वोल्टेज देके यहाँ पे वोल्टेज दे चेंज कर सकते हो, और यू प्रोवाइड ए सपोज पोटेंशियोमीटर, या यहाँ पे कोई रेजिस्टर कनेक्ट करके यहाँ जो वोल्टेज है उसको थोड़ा कम कर सकते. तो बाय यूजिंग दिस टू वे यू कैन change the voltage at this point, and it is called the control voltage, because by using the control voltage you can change the voltage at this point, and if the voltage at this point is changed, the output of the comparator will be changed. So it is the control voltage terminal function. Clear it is? ठीक है. कंट्रोल वोल्टेज क्या है, यहाँ का वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है, यहाँ का वोल्टेज चेंज करने में हेल्प कर रहा है. और अगर यहाँ का वोल्टेज चेंज हो जाएगा तो तुम्हारा आउटपुट भी चेंज हो जाएगा, कंपैरेटर 1 का आउटपुट चेंज हो जाएगा. ठीक है. जस्ट नो अप टू दिस. ओके, चलो ठीक है. अब कंट्रोल वोल्टेज गया, इसके बाद क्या है देखो, थ्रेशोल्ड वोल्टेज. थ्रेशोल्ड भी क्या है, ये किसी थ्रेशोल्ड को कहा गया. हाँ, थ्रेशोल्ड जो है, दिस इज द इनपुट ऑफ comparator 1. You can see pin number 6 is the threshold voltage, and this is the input, one of the input pin of threshold comparator 1, one of the input pin of comparator 1. So you can see the function here. This is the non-inverting input terminal. This pin number 6 is the non-inverting input terminal of comparator 1, which monitors the voltage across the capacitor. When the voltage at this pin is greater than 2 by 3 VCC, the output of the comparator goes high, which is turned. So pin number 6 में देखो क्या हो रहा है. Here, pin number 6, there is a capacitor is connected. Okay, so this capacitor, नेक्स्ट जो मल्टी वाइब्रेटर और सॉरी मोनोस्टेबल एस्टेबल देखेंगे ना, तो उसमें फंक्शन क्रिएट हो, समझ में आएगा. हियर ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड, एंड दिस कैपेसिटर वोल्टेज, इफ इट इज ग्रेटर देन 2 by 3 VCC, then this is a one terminal है, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग था ना. दिस इज द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल. पिन नंबर 6 इज द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, माने पॉजिटिव टर्मिनल of the comparator. If the voltage at the pin 6 is
greater than this terminal voltage, your output will be changed. So this capacitor voltage is the voltage across this pin number 6, and depending on that, your output will be changed. Comparator 1 output will be changed here. So in later classes, I will discuss the next circuit, which is multivibrator and S-table. In that circuit, you will get the capacitor connected, and this voltage is compared, voltage across the capacitor is compared with the 2/3 VCC, and according to that, here the output will be generated. Okay, so pin number 6 is the threshold input voltage, and it is connected to comparator 1. Next is the discharge. Pin number 7 is the discharge. So whatever the capacitor here, this capacitor is discharged by using the pin number 7. So it is called the discharge pin. In the external circuit, whatever the capacitor is connected in the circuit, this capacitor discharged through the pin number 7. Okay, so this is the discharge pin. Clear it is? तो वो जो नेक्स्ट जो कैपेसिटर कनेक्टेड होगा, जब हम लोग मोनोस्टेबल और एस्टेबल डिस्कस करेंगे, वहां वो वाला सर्किट आपको क्लियर होगा. फिलहाल जस्ट इतना याद रखो कि वट एवर द सर्किट कनेक्टेड एक्सटर्नली कैपेसिटर, दिस कैपेसिटर इज discharged by using the pin number 7, and this capacitor voltage is applied in the pin number 6. कैपेसिटर वोल्टेज जो डिस्चार्ज होगा 7 से, और इस वोल्टेज का अप्लाई किया जाएगा बाय यूजिंग द पिन नंबर 6. क्लियर? तो दिस इज द ऑल फन. अच्छा, एक पिन और कोई बचा है क्या? पिन नंबर 8 इज द VCC. So this is the supply pin. Your supply is either +5 volt or +15 volt. So 18 लिखा हुआ, +15 volt is applied to this. So this is all about the 555 timer IC. Clear it is? हाँ, यहाँ से जो क्वेश्चन होता है, draw and explain the 555 timer IC. हाँ, this pin diagram and the block internal diagram. और वो जो पिन उसका कौन कौन सा कैसे है? हाँ, ठीक है. ये 555 टाइमर आईसी से मैंने कम कॉस्ट में बहुत सारा प्रोजेक्ट किया है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट. ठीक है, आज के लिए बस. किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन, एनी क्वायरी? सर अभी क्वेरी नहीं है, पर एक डिमांड है आपसे. बोलो. तो ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का